गुड इवनिंग एंड नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के सेमिनार में। काफ़ी लोग सुबह आए थे हेल्थ टोटल के सेंटर में आज सुबह क्लिनिक पर। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज सबसे पहले बात आज महुआ में आज करते हैं। इसके लिए मैं दीप प्रज्वलन के लिए इनवाइट करना चाहूँगा हमारे चेयरमैन सौरभ मुखर्जी सर, हमारे वाइस चेयरमैन अंजलि मुखर्जी मैम, भिखू कमालिया सर, मिसेस कमालिया सर, मिसेस कमालिया मैम और संदीप सर। आप लोग प्लीज़ आके दीप प्रज्वलन के प्रोग्राम को ये करें। Thank you everyone. इस प्रोग्राम की शुरुआत हम एक छोटे से डांस प्रोग्राम से करने वाले हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आज हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने एक छोटा डांस का प्रोग्राम अरेंज किया है। एक डांस परफॉर्मेंस अभी देखेंगे। बुलाना चाहूँगा हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार लोगों को, प्लीज़ स्टेज पर आ जाए। प्लीज़ गिव देम अ बिग हैंड। प्लीज़ आ जाइए। ये सब के सब बहुत ही अच्छे इनके पोशाक है, बहुत अच्छे से इन्होंने ड्रेसअप किया है।
गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया। बहुत ही सुंदर। इनको देख के स्कूल का दिन याद आ गए। ठीक है, आज के हमारे गेस्ट हमारे चेयरमैन सौरभ मुखर्जी सर, को फाउंडर अंजलि मुखर्जी मैम आज यहाँ पे आ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भिखु कमलिया सर को फूलों के गुच्छे से इनका स्वागत करें। भिखु सर प्लीज़, सौरभ सर प्लीज़ आइए। एक ज़ोरदार तालियां हमारे चेयरमैन मैडम कमालिया, प्लीज आप भी आ जाइए, आप भी ज्वाइन कीजिए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सौरभ सर, एक रिक्वेस्ट है, आप 2 मिनट स्टेज पे ही रहिए। रिक्वेस्ट करता हूं अंजलि मैडम से, प्लीज स्टेज पे आइए। कमलिया मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुष्प गुस्से से उनका स्वागत करें। प्लीज एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ये एक पहला ही बहुत ही अनोखा किस्म का एक सेंटर है जहाँ पे बहुत ही इंटीग्रल प्रोसेस से एक ट्रीटमेंट चलेगी
उस चीज़ के लिए एक ऑथराइजेशन लेटर, एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सौरभ सर और अंजलि मैम से, ये सर्टिफिकेट मिसेस कमालिया और मिस्टर कमालिया को प्लीज़ हैंड ओवर करें। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, BHIKHU sir. मुझे मालूम है काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे रहेंगे। ये हेल्थ टोटल है क्या? हम अब महुआ में क्या करने वाले हैं? हम लोगों ने पिछले 35 साल 35 ईयर्स से हेल्थ टोटल ये ब्रांड चला रहे हैं। इस ब्रांड को बहुत खूबी बहुत सारे क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को, बहुत सारे लाइफस्टाइल हेल्थ और वेलनेस क्लिनिक्स चला रहे। थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ सर से कि इनकी जो जर्नी है उसके बारे में ये आप लोगों को बताएं। So Saurabh Mukherjee sir, please. Thank you, Deepak. नमस्कार भाइयों और बहनों, we are very happy to be here in MAHUVA along with Mr. BHIKHU to open a center over here for better health of the community. We have over 30 years of experience in this field and have treated lakhs of people, deal with preventive healthcare diseases. Before COVID started, we have been treating 15,000 patients at the same time. That was our capability. And now we have come to Gujarat, to MAHUVA, and it is such a pleasure, it is such a welcome change to be over here and look forward to spreading good health in society. What is the mission of Health Total? At Health Total, we believe in using food as medicine. And when this is combined with Ayurveda, food supplements, mild exercise, and lifestyle changes, it can rejuvenate health, reduce dependency on drugs, enhance energy levels, and bring about good health. There are many technical aspects of this, like high fiber, low glycemic index foods, moderate protein diets, along with therapeutic lifestyle changes. But we also believe that cutting calories is not the best approach to weight loss. Our programs support cholesterol management, blood glucose control, reduction in inflammation, and improved immunity, along with scientific weight management.
I will pause at this point of time and hand over the mic to Mr. Bhikhu. Would you like to talk, or should Anjali come and give a talk? Right, right. So over to you. Thank you. નમસ્તે મહુવા તમે કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I will talk to you about how to take charge of your health, because all of us have some problems, small, big, right? Some of us have diabetes, some of us have high blood pressure. I'm told Gujarat, there's a lot of high blood pressure here. And a lot of kidney disease, right? There is a certain eating habit over here. People eat in a certain way, which is healthy, but it may not be healthy for you. It may be generally healthy, right? So before that, I'll just highlight that we are a wellness company, wherein we use an integrated approach, which means we use Ayurveda, homeopathy, nutrition, to reduce the disease burden in an individual. We believe in the science of creating health in order to make the person healthy. So you may have, let's say, migraine, recurrent migraine, or you may have obesity, central obesity, weight in the abdominal region. Or you may just have low energy, or you may have hair fall, acne, PCOD. There are hundreds of these problems which we live with. When we are born healthy. Generally, when we are born, जब हम पैदा होते हैं, हम healthy होते हैं, generally, most of the time. Then as we walk the path in life, we develop ill health. And by the time we reach 35, all of us have some problems, correct? Either we can't sleep, insomnia, or we are constipated, or we have tiredness, irritability, knee pain, and the list just goes on and on. Who do a comprehensive case history, blood investigations, and they practice targeted therapies. That means if you have a particular problem, we get into the
dard hai, what do? You take a painkiller? Right? You don't understand why you've got the headache. It could be low sugar, it could be constipation, it could be low hemoglobin. बहुत सारी reasons होती हैं for your headache or joint pain or low energy. So we get to the root cause of the problem and therefore help you to correct that. So, yeah, I'm on slide 5. Yeah. So it's often confusing to know what is healthy and what is not, correct? Some people say besan is healthy. You eat a lot of besan, right? Some people say besan is healthy. It has a low glycemic index. There are others saying, no, besan you can't eat. Peanuts are healthy. Peanuts are not healthy. Should we drink milk? We cannot drink milk. Is good healthy? Good is not healthy. Eat this, don't eat this. Very confusing, correct? The whole science of nutrition is very confusing. So let's clear this confusion right now by helping you to understand that each one of you are unique. You are a unique masterpiece. See, all of us have the same 2 eyes, 1 nose, lips, but we look different. We have the same brain structure, but we think differently. Same way, all of you have a certain eating habit, but you need to personalize it. Your deficiencies are different, your genetics are different, your blood reports. 4 people in the same family will not have the same blood test. Correct? Sabki blood test alag-alag hongi. So you need to personalize it and understand and match the food therapy to your body chemistry. That is nutrition. Nutrition does not mean eating a list of healthy foods which you can Google. Google कहता है खजूर खाओ, तो आप खजूर खाते हैं. Google कहता है आप शुगर केन जूस पियो, बहुत अच्छा है. Google कहता है घी खाओ, कहता है ना, घी is very famous suddenly. It was meant for our ancestors who worked in the farm. They did a lot of work. You and I sit in front of our computers in an AC room. Do we do that kind of work? So how can ghee be beneficial to a person who's sedentary? It will increase blood fats. It will increase triglycerides. It will choke your arteries. Of course, it's a good oil. There's nothing wrong. Ghee by itself is good. But is it good for me is the question. And that is nutrition. That is where Health Total is different from any other nutritional therapies. Plus to that, we add Ayurveda. Because nutrition alone is an important but weak science. Why is nutrition weak? Because सिर्फ diet change करने से blood pressure तो कम नहीं हो जाता. If you're taking medicine, you just change your diet. You will benefit, but you cannot remove the medicines. You cannot remove the drugs. So we add Ayurveda. Ayurveda is powerful. It is like food in a capsule. Right? If you want to have 25 leaves of tulsi, can you eat every day? 25 leaves, you're just chawing in the morning. Not possible. 1 day, 2 days, you can do it. But tulsi capsule तो आप ले ही सकेंगे. That is Ayurveda. नीम का capsule ले पाओगे. Blood purifier. लड़कियों को acne होता है. We give neem capsules. Just clears up. Very powerful. Diabetics को you give neem. You understand? So we add Ayurveda. Then we add homeopathy. Why? Because everything to do with the mind, your mental diet is very important. Homeopathy looks after the mind, stress. Most diseases today are related to stress. महुआ में कोई stress नहीं है.
Am I right in saying that? There is less stress. Correct? Big families, happy families, right? But if you see around the world, there's a lot of stress. Relationship problems, work problems, financial problems, health problems, right? So kahin na kahin, you get stressed. And when you get stressed, it's only homeopathy that can help. Then skin problems, psoriasis, autoimmune disease, rheumatoid arthritis. Usme Ayurveda itna kaam nahi karta. So we add homeopathy. So combination of homeopathy, Ayurveda, nutrition, when you combine, the combination is fabulous. We find the patient becomes well in 90 days and no more. We've been practicing this since the past 40 years. And now we bring Health Total to MAHUVA to make this population healthy. So let's go on to the next slide. I'm on slide 6 now. So Hippocrates, everyone knows about Hippocrates. What he says is there is a personal doctor sitting inside of you to take care of you. Do you agree with Hippocrates? Each one of you have a personal doctor sitting inside of you. All that doctor is asking for is the right ahar, vihar, vichar, correct? Deficiencies have to be corrected. And in today's day and age, there are a lot of deficiencies. D3, all of you are aware of D3, vitamin D3. World over, there's a pandemic. There's a deficiency of vitamin D3. There's a lot of bone thinning in Gujarat. I don't know if you're aware. The statistics show blood pressure, kidney disease, and bone thinning are the biggest problems in Gujarat. Women get osteoporosis by the time they are 65, 70. Right? And how do you protect yourself? Take adequate vitamin D apart from the diet and other things. So we have to respect the doctor that is sitting within us. Now, what are nutraceuticals? Just the next one. Nutraceuticals, food with a medicinal property, like wheat bran. You've heard of wheat bran? The choker. When you chano wheat, what you get on top is wheat bran. It has laxative properties. It has a lot of fiber. And that type of, so there are different fibers. This type of fiber cleans the system. There is another type of fiber which reduces cholesterol. And there is another type of fiber that reduces blood sugar. So in wheat bran, you have the laxative fiber, which helps to control all forms of constipation. And once your constipation is controlled, you will not get headache, you will not get acne, because you need the clean. You need to be clean every day, right? So that's just one example. Then you have garlic, lasan, adrak, right? It has anti-inflammatory properties. When you eat adrak, pachan sahi ho jata hai, gas kam ho jati hai, correct? Lasan se blood pressure kam ho jata hai. You have 2-3 kacha lasan in the morning. It is a vasodilator. It has allicin in it. That's the active ingredient. And when आपकी blood vessels खुल जाते हैं, blood pressure कम हो जाएगा. Correct? So this is nutraceuticals. What I'm just touching upon topics which we use at Health Total, just so that you understand how we use food as medicine. Now, it turns out, next one, that 90% of your health, 90% is controlled by your choice. If you see the right on top is genetics. Genetics is only 10%. Look at it na, there is diabetes in my family, so I should also get diabetes. No, your chances are only 10%. 90%, the choice is with you, your environment, your diet, your mental diet, your physical diet, how you think and eat and do and exercise, all of that, these things really depend on your environment and your lifestyle. Next one. So,
everyone has had chai in this cup. Do you have chai in this cup? These are styrofoam cups, right? From this, there is something called styrene, which leaches out from the hot coffee into your mouth. And that is a possible carcinogen. It's good to be aware. With the coffee, you get phthalates. What are phthalates? To make plastic bendable, they add phthalates. These phthalates cause cancer. They cause hormonal imbalance. They cause irregular periods. They cause hundreds of other problems, psychological issues. So we are living in this world today. Toxins are entering our body. Next one. All newspapers are full of this information. There is a lot of news we get bombarded by invisible toxins from everywhere. We have lead in auto exhausts. आप रास्ते पे walking करते हैं कभी? Are you walking on the road sometimes? And when you walk on the road, you are exposed to auto exhaust, petrol fumes. वहाँ से lead enters your system. You understand lead, mercury, arsenic? ये heavy metals होते हैं. Aluminum के बर्तन होते हैं, correct? All these are heavy metals. You should stop using aluminum utensils because they cause Alzheimer's. So all these things, if you have tobacco or cigarettes, there is cadmium, which is a heavy metal that enters your body. If you're eating fish, so mercury from fish enters your body. So these are all heavy metals, and exposure to these toxins can be a serious problem. Next one. So, just to give you some idea about toxins, and therefore the need for detoxification. Out of 5 million registered chemicals in the world, 5 million registered chemicals in the world, 50 lakh registered chemicals in the world, you and I come across 70,000 on a daily basis. How? Ask me how. 70,000 on a daily basis, out of which 20,000 are carcinogenic. In your soaps, in your shampoos, in your paints, in your polishes, there are chemicals everywhere. There's arsenic, there's lead, there's all these heavy metals. I have some US statistics, jisme they tell us that the US dumps 9 million pounds of antibiotics to fatten their farm animals, 90 billion pounds of toxic wastes in our environment, and 1.2 billion pounds of pesticides on its crops annually, and bombards our landscapes with questionable amounts of electromagnetic radiations. You're aware of electromagnetic radiations? Your cell phones, televisions, but there is a lot more in US. So they are dumping all of this in the environment. We are wallowing, all of us, in our own toxic wastes. You can't run away. We are all a community. We are all living together. We are all one at the end of the day. The whole world is one. And we are breathing this air, and we are, getting more and more toxic. All these toxins, how do they enter our body? Through our nose, we breathe it, and through our mouth, we eat it. The pesticides in your fruits, vegetables, we're eating it, right? So, chronic disease, just the next. ये काफ़ी दूर है आप लोगों के लिए, लेकिन just to understand कि
environment से ही सारे toxins, drugs, chemicals, lack of exercise, इससे ही हमारा genetic changes आ जाते हैं body में. हमारे genes, suppose you're born with bad genes, we can switch it off. We can switch off the bad gene by eating the right foods and exposing to the right environment. Suppose you're born with good genes. By eating the wrong food, आप वो भी switch off कर सकते हो. And by eating the right food, you can express the good gene. This is called nutrigenomics. So we practice that at Health Total. I just thought I'll touch upon that. जिसमें जीन टेस्टिंग होती है, आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या आपको डायबिटीज़ होने वाली है कि नहीं, आपका लिवर कैसा है, आप कितना अल्कोहल ले सकते हैं. आई एम नॉट एडवोकेटिंग अल्कोहल, लेकिन लिवर सही है तो अल्कोहल लेने में आपके बॉडी को हार्म नहीं होता. लेकिन सो दैट इज़ वाई वी वरी कि कई लोग इतना कम खाते हैं तो इतने मोटे कैसे हो जाते हैं, और कई लोग इतना सारा खा के पी के भी पतले रहते हैं. दिस इज जेनेटिक्स. कई लोग सिगरेट फूक फूक के टिल 95 फिर भी नो कैंसर नथिंग, करेक्ट. और कई लोग टी टोटलर्स, बिल्कुल सिगरेट कुछ नहीं, नो अल्कोहल, बट एट 60 और 55 दे गेट कैंसर. इट्स द लिवर. Liver test, we have the gene test for liver. If you have a great liver, we can help you to look after it better. Most people have a liver which does not detoxify well. And therefore, किसको detoxification ज़्यादा देर तक करनी चाहिए, किसको साल में एक बार करनी चाहिए, all that you come to know by testing just 4 genes in the liver. So it's a saliva test. You spit in a bowl and we come to know andar kya hai. Because all your genetics are also there in your saliva. So these are very interesting things, and we bring that to MAHUVA through Health Total. Next. Do you agree with this? Even a person who eats the best possible food is not living in the perfect environment. You may be eating right, but your environment is not right. So everyone needs to detoxify. And diet alone becomes a weak medium. Therefore, you need herbs, supplements, and homeopathy. As the waistline grows, so does our health risks. Everyone is aware of that, right? And when the toxic overload increases, it comes out from the skin. Skin is your third kidney. All the cadmium, arsenic, fried food, trans fats, ये कहाँ जाते हैं? They come out through the skin. This is toxic overload. But a good detox program can sort out this problem to a very large extent. Of course, if your immunity is low, you will experience low energy, allergies, digestive complaints. जब toxic burden बढ़ जाता है body में, हमारा जो अंदर का cleaning system, we all have a cleaning system, automatic cleaning system, वो overload हो जाता है. जैसे आपके घर में suppose there is 2 servants, but you have 100 guests that have arrived. तो load ज़्यादा हो गया. These 2 servants can't do the cleaning and everything, right? Same way, in our body, the cleaning system, the GDS system, the glutathione detoxification system, it's called the GDS, gets overloaded if there are too many toxins. And आज के बच्चे, at least in the cities, I don't know how it is over here, they are having pizzas and burgers and fried food and trans fats and that kind of food, mithais and sweets and all of that. So body every
day matters. Every meal matters. And if you bring this awareness, you will not know ill health. You will always stay healthy. So, what is the impact of weight loss? चल हम weight loss की बात करते हैं. Just 5% weight loss. मान लो आप 70 किलो के हैं. 5% कितना होता है? 3.5 किलो. Right? 3.5 किलो is nothing. Just 5% weight loss से आपका HbA1c नॉर्मल हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, HDL बढ़ जाता है. अगर 10% वेट लॉस किया आपने, यानी कि 7 किलो, 70 किलो के अगर हैं तो 7 किलो अगर आपने वेट लॉस किया, तो ट्राइग्लिसराइड्स यानी ब्लड फैट्स विच इज़ एन इंडिविजुअल रिस्क टू हार्ट डिजीज, वो भी कम हो जाता है. और ये हमने बहुत बार करवाया. लोगों का 500 ट्राइग्लिसराइड्स होता है, इट हैज़ कम डाउन टू 60 just with diet, not using any medication, no fenofibrates, no statins. That is the power of detoxification and correction. Walking आप लोग करते होंगे ज़रूर, और कई लोग वॉकिंग करते हैं पतले होने के लिए. ज़्यादातर तो लोग पतले होने के लिए वॉकिंग करते हैं, लेकिन इतने ढेर सारे बेनिफिट्स हैं वॉकिंग के. तो अगर आप पतले भी हैं, यू शुड स्टिल डू द वॉकिंग, बिकॉज इट इम्प्रूव्स योर मूड. फर्स्टली इट रिलीव्स बैक पेन, आपका मसल्स डेवलप होते हैं, रिड्यूसेस हिप फ्रैक्चर्स, लोअर्स रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट. इफ यू डोंट वॉक, क्लॉट्स ज़्यादा हो जाते हैं. knee gets lubricated, joints get lubricated, strengthens the muscles, lowers blood pressure and risk of heart disease. ठीक है. ये एक्सरसाइज इज नॉन नेगोशिएबल. कौन लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं बताइए, हाथ ऊपर कीजिए. एक्सरसाइज नहीं करते, शाबाश. 10%, नॉट बैड, वेल डन. तो बाकी लोग करते हैं. यहाँ फेंस पे है, हाथ उठाऊं नहीं उठाऊं क्या पता कोई बात नहीं. बट इट इज नॉन नेगोशिएबल. You have to exercise every day, especially after the age of 35, but I would say even otherwise. Okay. So, sitting is the new smoking. पता था आपको? Sitting is the new smoking. मतलब जितना बुरा असर smoking से होता है, उतना ही बुरा असर sitting से होता है. और how much sitting? So it says, if you see the fine print, your body's ability to process insulin is affected by just 1 day of excess sitting. Body में insulin होती है, insulin अपना काम करती है. अगर आप ज़्यादा बैठेंगे तो वो अपना काम करना बंद कर देती है. It is called insulin resistance. Just 1 day. अगर आप ज़्यादा देर तक बैठेंगे तो ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाता है to the brain, and because of which your brain also slows down. Brain fog, you experience brain fog. कभी कभी ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं आपसे लेकिन ठीक से समझ में नहीं आ रहा. And sometimes you are like a train, you know everything, correct? तो brain fog कब होता है? When you're just not moving, not doing yoga, just sitting in one place, watching TV, आड़े टेढ़े postures में you're watching TV. That's the time your brain slows down. Good cholesterol, जो अच्छा cholesterol है, it drops by 20%. And even if you exercise for 1 hour a day, it is not enough to fight the ill effects of sitting. आप समझे? ये नहीं कि मैं 8 घंटे बैठता हूँ and 1 घंटा I'll walk. It doesn't help. You've got to move around. People who sit for more than 23 hours a week are at an increased risk of heart disease. So these are important things to know before you embark upon your health journey. Next.
So these are some of the Femina Miss India. Lara Datta आप देख रहे हैं, Priyanka Chopra, it's not very clear, Neha Dhupia. So they also eat our health foods, and they are very happy with our program. They are regularly following the diets that we give them. Next. जब लारा दत्ता मिस वर्ल्ड बनी थी तो हेल्थ टोटल ने अनाउंस किया था, हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ ब्यूटी. डू यू एग्री? हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ ब्यूटी. सो शी वन द क्राउन. ऑफ कोर्स वी वर ट्रीटिंग हर, तो इस तरह से हमने उसकी मदद की. ये हमारे बम्बई में थोड़े लोग हैं जिनका देखो कितना फ़र्क आया है. शी हैज़ लॉस्ट, ये हमारे खारगर सेंटर की हैं, 18.5 kgs लॉस हुआ है इसका. पहले इनका बॉडी फैट 42 था. आफ्टर द प्रोग्राम 10% बॉडी फैट हैज़ रिड्यूस्ड. नेक्स्ट. This is from our Borivali Center in Bombay. 17.1 kgs she has lost. And waist circumference पहले था 38.5, after program 29 inches. आपको ये बात पता है कि if you are a male and your waist is more than 90 centimeters, यानी कि 35 inches, it means you have visceral fat. Visceral fat is fat inside the abdomen. जैसे आर्म फैट इज सबक्यूटेनियस फैट, वो इतनी हार्मफुल नहीं होती, लेकिन जो पेट के अंदर, हार्ट के अराउंड, किडनीज के अराउंड, लिवर के अराउंड फैट होती है, उसको विसरल फैट बोलते हैं. तो आपको कैसे पता चले कि आपको विसरल फैट है? तो WHO ने एक सिंपल फॉर्मूला बताया है. इफ़ यू आर अ मेल, अडल्ट मेल, एंड आप अपना नेवल से अपना मेजरमेंट ले लो, and if that is more than 35 inches or 90 centimeters, 100% you have visceral fat, and that increases your risk of heart disease, diabetes, all these problems. And for women it is 80 centimeters. If your waist circumference is 80 centimeters, यानी कि 31.5 inches is your upper limit. 80 centimeter. उससे ऊपर है, the lady has visceral fat. है ना आसान तरीका? So please go and check your waist circumference and उसको 31.5 के ऊपर life long नहीं आने देना. And if you are a male, not more than 35 inches, because visceral fat से ही all the other बीमारीज come. Aches and pains, inflammation, lots of these problems. ये तो आप जानते हैं कि कोई भी ड्रग लाइफस्टाइल डिजीज़ करेक्ट नहीं कर सकता. बेशक आपको डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, डॉक्टर आपको स्टैटिन दे रहे हैं, आपको ग्लिमिपिराइड दे रहे हैं, मेटफॉर्मिन दे रहे हैं, अलग अलग दवाइयाँ दे रहे हैं, उससे हम क्या कहते हैं बॉडी को? शट अप, दैट्स ऑल. शट अप, मैं आपके नंबर्स ठीक कर दूंगा. ब्लड के नंबर्स ठीक हो जाते हैं, बट अंदर जो खिचड़ी पक रही है वो ठीक नहीं होती. टिल यू डोंट डू दीज अदर थिंग्स. Reverse insulin resistance, correct metabolic syndrome, do the deep level detoxification, lose visceral fat, take a lot of nutrients, nutritional deficiencies correct करो. जब तक ये सब नहीं करो, you will just get sick and sicker and sicker. Next. I just explained this, 35 and 32 inches abdominal circumference. This lady in Borivali, yeah, so she lost 16 kilos. Next. अगर आपको एसिडिटी है, if your body is acidic, acid and alkaline आप जानते हैं, अगर आपकी बॉडी एसिडिक है, आपको भूख ज़्यादा लगेगी. बिकॉज एडिपोनेक्टिन एक हार्मोन है जो भूख कम करता है, बट इट गेट्स ओवर एक्टिव व्हेन यू आर एसिडिक.
So therefore you feel extremely hungry. You want adiponectin, but वो body में पैदा नहीं होता. It increases, if you're acidic, you'll get more inflammation, more oxidative stress, dyslipidemia, cholesterol problems, so on and so forth. Next. So acid is sickness, alkaline is health, it's clear. pH has a direct correlation with adiponectin. Adiponectin is the hormone which you want because it does not make you hungry. It controls your hunger. You also have less enzymes. Pachan shakti आपकी खराब हो जाती है if you are acidic. Next. People above 40 years of age are acidic. Why? Because they eat too much milk products, paneer, milk, too much curd, coffee, soft drinks, meat, trans fats, oils, alcohol, drugs. Next. After age 20, 20 साल के बाद ही आपका alkaline reserve कम हो जाता है. Acidic ज़्यादा हो जाता है unless you fill it up. You fill it up with calcium, magnesium, raw vegetable juices, lot of shark, leafy bhaji. If you don't eat all of that, आपका deplete होता जाता है. And you keep feeling acidic and you don't pick up nutrients. Iron कम हो जाता है ladies में. They're tired all the time. They're not fresh. Okay, next. At 40 years, the decline speeds up significantly. So that is the aging process. So what is the health total approach? वो tip of the iceberg आप देख रहे हैं? Patients जब आते हैं ना हमारे पास, तो ये बताते हैं कि हमारा से obesity है, या autoimmune disease है, या cancer है, या arthritis है, ये सारी बातें. तो नीचे the underlying causes are these. We correct that. Hormonal imbalance, inflammatory imbalance, digestive imbalance, microbial imbalance, no? gut health हम देखते हैं, mitochondrial imbalance, structural, a lot of imbalances in the system. ऊपर से वो समझ में आता है जो आप देख रहे हैं, frank disease, obesity, diabetes, ऐसे लोग आते हैं, and हम जब ये सब correct करते हैं, then they feel extremely energized, healthy, उनकी immunity बढ़ जाती है, and they feel fabulous. So what does Health Total do? We have a two-pronged approach. We add what is lacking, यानी supplements देते हैं. आपके अंदर iron की कमी है, किसी के अंदर folic acid की कमी है, किसी के अंदर magnesium की कमी है. So we add everything. And we allow the body's wisdom to take over and correct the system. And we remove all the blockages, यानी कि detoxification. So all the pathogens, environmental toxins, heavy metals, we give Ayurvedic medicines from the clinic and उससे आपके toxins निकल जाते हैं. So how to get started? तो पहले consult होती है at the clinic, the patient comes. Then there are weekly visits, हफ्ते में एक बार, अगर आपको वज़न कम करना है. And अगर health program करना है, यानी कि कोई weight problem नहीं है, you just want to correct your other irregular periods, migraine, lack of sleep, whatever, energy. उसके लिए there is once in 15 days visit. And we start progressing towards the result from the first week onwards. Maximum 90 days, which is 3 months, and the patient is perfect. If it's a chronic case, बहुत ज़्यादा problem है, then 180 days, 6 months. All right? And then we hold your hand and help you maintain. नहीं तो फायदा नहीं है ना, you'll go back to your old pattern. So we help you maintain. We have a maintenance program. So how do we do it? We take a detailed case history. We do a physical examination. We do lab tests and gene testing. So we have seen a lot of happy results, more than 90% of the time. Nutritional medicine can be used in prevention. Next one.
Next one. Rohit. Yeah, thanks. So the programs can help you to boost your immunity, your energy, reduce body fat, prevent lifestyle disease, improve your performance, and it helps you to stay healthy. When you are well nourished, well exercised, well rested, free of toxins, free of negative emotions, something to do, someone to love, you will not fall sick. You will always stay healthy. Thank you. If you have any questions, I'll be more than happy to answer them. मोटापा कैसे कम करें, डायबिटीज़ पे कंट्रोल कैसे करें, एसिडिटी पे कंट्रोल कैसे करें, हाई कोलेस्ट्रॉल कैसे रिड्यूस करें, इस पे अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो. आपको जो आज गोल्डन एडवाइस मिलेगी वो ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलेगी. हाथ ऊपर कीजिए, मैं माइक लेके आ जाता हूँ. दूसरा, आप चाहे तो क्वेश्चंस व्हाट्सअप कर सकते हैं. यहाँ पे सेंटर मैनेजर है दृष्टि, उनको भी व्हाट्सअप करोगे तो उस पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा. Right. So I think they've understood very, very clearly, and therefore there are no questions. Fabulous. So I take your leave. Thank you very much. You were a wonderful audience. Thank you. Thank you, ma'am, for your guidance. हेल्थ टोटल सेंटर महुआ में गुजरात का पहला सेंटर है. ये इसका एड्रेस है श्री शुभ लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, कुबेर बाग के नज़दीक. कल से ये क्लिनिक चालू रहेगा सुबह 10 से लेके 7 बजे तक. तो आप लोग आ सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्लिनिक पे मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी, स्किन, हेयर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट किया जाएगा आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और डाइट प्लान से. इसका लाभ ज़रूर ले. आज हमारे यहाँ आयुर्वेदिक और होम्योपैथी एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद है. मैम, वो आपको एक फ्लावर बुके देके आपका स्वागत करना चाहेंगे. महुआ के आयुर्वेदिक और होम्योपैथी फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव को मैं बुलाना चाहूँगा. प्लीज़ आ जाए. मैम प्लीज़ स्टेज पे आ जाए. जोरदार तालियों से स्वागत करें आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी फेडरेशन के महुआ सिटी के एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव. थैंक यू मैम. थैंक यू ऑल ऑफ यू. अब वक्त है इंट्रोड्यूस करने का हमारे यहाँ के बिजनेस पार्टनर भिखू कमालिया जी. मैं इन्हें स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा. एक जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें. Good evening to all. Our today's chief guest, Dr. Anjali ma'am, Saurabh sir, and all team came from the Bombay. Sandeep sir, Deepak sir, Rohit bhai. All our invited guests. In 2013, અમે એક એજ્યુકેશન્સમાં ન્યૂ થિંગ્સ કિડજી લઈને આવ્યા હતા. તો ઇન લાસ્ટ 10 years
અમને જે રિસ્પોન્સ સપોર્ટ તમારી સાઈડથી મળ્યો છે એના અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. આજે ઇન 2023 we come with new concepts in health sector. पेरेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि गुजरात का फर्स्ट सेंटर्स है जो महुआ में ओपन हो रहा है, जहां आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड न्यूट्रिशंस तीनों कंबाइंस है. आज तक गुजरात में एक भी सेंटर्स नहीं है. एंड वो चीज़ हम महुआ में स्टार्ट कर रहे हैं इन द गाइडेंस ऑफ अंजलि मैम. सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर. एंड वी होप कि हम महुआ में लोगों को अच्छी हेल्थ दे पाए. कल से हमारा सेंटर ओपन है. हमारे सेंटर पे 3 डॉक्टर्स बैठने वाले हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड न्यूट्रिशंस. And they will work with guidance of Anjali ma'am. So once again, all the invited guests, thank you. आप लोगों ने हमारा इन्विटेशंस में इन्विटेशंस हमने जो दिया उसमें टाइम निकाल के यहाँ पे प्रेजेंस रहे. आपका टाइम निकाला फॉर डेट्स. एंड जो आयुर्वेदिक एंड मेडिकल एसोसिएशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं उसका भी हम स्वागत करते हैं. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आने का. फिर से धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों का. आज इवनिंग का वक्त निकाल के संडे को आप लोग यहाँ आए, इसके लिए धन्यवाद. मैं, मेरी टीम और हेल्थ टोटल की तरफ से आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं. कल से क्लिनिक 10 to 7 चालू रहेगा, जहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल होंगे. आप लोग कृपया विजिट कर सकते हैं. आप जाइए, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा. मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें तो बता दी. यहाँ पे क्या है, अंजलि मैम ने गाइडेंस दे दिया. इसके ऊपर महत्वपूर्ण अंग है, इसको ठीक रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो महुआ की शुरुआत हो चुकी है, महुआ से हमने शुरुआत की है और अब गुजरात में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फिर से एक बार. थैंक यू. फिफ्थ ग्रेड गर्ल्स जिन्होंने परफॉर्म किया था वो अवेलेबल है तो प्लीज़ कम. 5th ग्रेड गर्ल्स.